RJ Akriti. Oh, hi, what's up, people? My name is Akriti. Welcome to my show, Red Verified. And thank you so much for all the प्यार मोहब्बत you are giving to my show. I'm really glad. मतलब ऐसा लग रहा है जिस मुद्दे के साथ मैंने शो को क्रिएट किया, आपके सामने लेकर आई, I am probably getting to that purpose and it means a lot. So, okay, continuation में आज भी आपके साथ एक ऐसी क्रिएटर को मैं सामने लेकर आने वाली हूँ जिनके रील्स देखकर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मजे करते हैं, चिल करते हैं. यू एक्चुअली cannot pass through her. When I say pass through her, I mean to say कि ignore नहीं कर पाओगे because she'll make sure that you spend those 15, 20, 30 seconds watching her do fun stuff. Life के बारे में हो, general जिंदगी हो, her observation powers are next level. And no wonder आपके दिलों पे कर रही है वो राज. और इस समय Red FM Studios में none other than Vagmita. Hi, welcome to Red FM Studios. What's up? आपका स्वागत है. Having me. और ये आपने बोला ना कि people can't ignore me. It's because I'm so loud. कि कोई ignore नहीं कर सकते. राजस्थानियों की एक बहुत अच्छी quality होती है. Okay, so welcome to my show. And very happy to have you here. And तुम्हारे reels and all that, I've checked all of it out and there's so much fun. उसकी सबसे interesting चीज़ है the observation and the way you put things across in the most minimalistic words. तो ये जो है इसके बारे में आज हम पता लगाने वाले हैं बिल्कुल कि ये तुम्हारी जो अपरंपारिता की स्किल्स है ये स्किल सेट कहाँ से आ रही है. अभी तो तुम फुल टाइम क्रिएटर हो एंड आई एम डेड श्योर तुम्हारी सैलरी वहीं से आ रही है. आई शुडंट इवन कॉल इट अ सैलरी. डोंट वी गेट सैलरीज. बस चल लेता है काम. अरे बस बहन तुमने जो मॉडेस्टी दिखा दी ना यहाँ पर हम तो यही क्यूट. सबसे पहले सर्वप्रथम टेल आवर व्यूअर्स एंड एवरीबॉडी आप कहाँ से हो. वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम. मुंबई में कब आई. योर बैकग्राउंड. So, I'm from Jaipur, Rajasthan. And I came to Bombay 8 years ago. So as good as now I'm a Bombay citizen only. 8 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ. और I came to Bombay to escape from my family. Well done. Go for it. इंटरव्यू का टोन सेट हो चुका है और इसी के साथ मुझे अपने प्रोमो कंटेंट भी मिल रहा है. Go for it. I was like मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो कोई मुझे because I'm the youngest child, very overprotected. I want to get out and I was like let me go just anywhere. And my brother was based in Bombay, so they were like कि चलो ठीक है, go and live your life. And I started my college with an English literature degree. And then I did a filmmaking degree. And then I became a content creator. तो इतनी भारी भरकम पढ़ाई जो तुमने शुरू की तो इंग्लिश लिटरेचर तक तो फाइन है. एक तो ग्रेड की डिग्री लेनी है. ठीक है. तुमने उसके बाद फिल्म मेकिंग भी किया. मुद्दा क्या था. एजेंडा क्या था. देखो इंग्लिश लिटरेचर डिग्री तो मैंने इसलिए की क्योंकि मेरा और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और वो उसी में हो गया. चलो ठीक है कर लेते हैं. पास कर लिया था. हाँ, प्रॉपर्ली पास तो कर लिया. अटेंडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बट पास हो गई थी. पास हो गया. बॉर्डर लाइन पास से ठीक से पास. नहीं एक्चुअली ठीक से पास. हाँ नहीं तो पेरेंट्स वहाँ रहने नहीं देते ना बॉम्बे में इसलिए. But one thing I realized in while doing my English literature degree was that वहाँ पे you get a very keen observation in human behavior. क्योंकि you read psychology, a bit of psychology, a bit of sociology, a bit of like history, a bit of politics. Because English literature के अंदर they teach you less about the stories that you're reading and more about the scenarios in which the stories were written. So you get a very keen eye in observing human behavior and human psychology. उसके बाद फिर I worked for a little bit and I was like ये तो टट्टी है मुझे नहीं करना है. तो मैं और पढ़ लेती हूँ. And then I did my filmmaking degree. वहाँ पे मुझे actually realize हुआ that this is what I want to do as a passion. Like this is what I have a passion for. This is what I want to do for a living, which is telling stories. I have always wanted to tell stories as a child and that just didn't go away. तो कई लोगों का होता है ना कि बचपना वो निकल जाता है कि ठीक है you get over it as you get into the world you stop really feeling as passionate about things and then you get into the grind and you lose that thing. This is something I never lost. I constantly was just as passionate about telling stories through any medium. You put me in front of an audience, you put me in front of a camera, you put me anywhere and you just tell me to entertain people and tell stories and I will just do that. How cool. So yeah. So jobs की, नौकरियां की, कहाँ की, क्या किया उस समय कैसे हालात थे. तो नौकरी तो मतलब इंटर्नशिप्स भी की हैं 2-2000 की. कॉलेज में बेसिकली मुझे बस से जाना पसंद नहीं था तो मैंने कहा इससे मेरे पास फर्स्ट क्लास ट्रेन पास आ जाएगा
तो मैं इंटर्नशिप कर लेती हूँ अच्छी जगह पे. तो इंटर्नशिप भी की है. आई हैव लाइक बेसिकली हैड द जॉब ऑफ कि किसी का इंटरव्यू चल रहा है, जैसे आई यूज्ड टू वर्क फॉर एज एन इंटर्न फॉर अ प्रोडक्शन हाउस. तो वो बोलते थे कि ये एडिट कर दो, इसमें से टाइपोज हटाओ, इसके अंदर से पेपर काटो. दैट I would go right there from college and do that. I did that for 2 years. उसके बाद कॉलेज से निकलते ही the first नौकरी that I got was as a Bollywood writer. तो देखिए आपको क्या पता है क्या हो रहा है सलमान खान की लाइफ में, आप जानना चाहते हैं. Yeah. Okay. I've done all of that. Okay. And then 1 महीने बाद they realized कि तुम में टैलेंट तो है, तो तुम ये मत करो. उसके बाद they promoted me as like a head of content. ओके. फिर वो किया और मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ. क्या बात है. I have been diagnosed with ADD, so I have very little attention span for anything. And my agent will tell you that he finds it very, very difficult to like hold me hostage at one place कि ये तो करना ही पड़ेगा, इससे नहीं भाग सकते. तो I get bored very fast. वहाँ से मैं 1 साल में बोर हो गई. उसके बाद I was like इससे challenging क्या हो सकता है. And that's when I did my filmmaking degree. Okay. And that was the most challenging thing I've ever done because वहाँ पे ये होता है कि आपको लगता है आप तोप हो. वहाँ पे आपके जैसे 36 और लोग हैं. So then you realize you're a nobody. And yeah, it's humbling also. It's a nice feeling. क्योंकि मैं लियो भी हूँ तो एक वो भी होता है ना. Hey babe, give me a high five. Leo to Leo, yo. Yeah. तो उसके बाद फिर मैंने ये भी किया है कि अब फिल्म मेकिंग कर ली. तो फिल्म मेकिंग की दुनिया के अंदर तो आप कुछ भी नहीं हो. तो वहाँ पे whether you start off as a writer or as an AD, people just think you're stupid, which you are. क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता है लाइफ के बारे में. And I learned and then pandemic happened. पैंडेमिक में नौकरी में जहाँ पे 25,000 मिल रहे थे वहाँ पे 2500 मिलने लग गए. तो मैंने कहा ये तो नहीं चल पाएगा. ओके. हाँ, क्योंकि खर्चे तो बहन के उतने ही थे. ऑब्वियसली कुछ तो करना पड़ेगा. अरमान तो हम करते नहीं. Exactly. Then I started posting videos on Instagram and I started my writing workshop on Instagram. And then my channel started growing. And then I quit that job. इस्तीफा देने में जो मजे आते हैं ना, मुझे आज तक किसी चीज में मजे नहीं आए. ब्रेकअप करने में और इस्तीफा देने में भाई क्या मजे आते हैं. डेंजरस डीवा. गुड, नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो तुमने जब अपना चैनल स्टार्ट किया, when you started Instagramming and making content, और at that point of time thought क्या था? Was planned to do it just for the fun sake कि ठीक है मेरे पास अभी कुछ करने को नहीं है, as a pandemic and ठीक है लिखना तो है ही कहानियाँ, जैसे तुमने बोला मुझे कहानी बोलना अच्छा लगता है, उस एजेंडे से किया था या फिर एकदम डायरेक्टेड थॉट था कि नहीं आई हैव टू बिल्ड इट, ग्रो इट एंड इवेंचुअली मेक इट फुल टाइम? मेरे लिए आई लूज द फन फ्रॉम एनीथिंग इफ आई हैव अ प्रॉपर एजेंडा. अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, बिकॉज एज किड्स स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड इट्स ड्रिल्ड इनटू यू कि कुछ करो तो ढंग से करो, तरीके से करो, वरना मत करो. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है एंड यू डोंट एंजॉय व्हाट यू डू. So whenever I'm starting something, I first think, is it something that gives me joy? If yes, then I will think about the monetary benefits. Because otherwise then it's just, I mean, a lot of other people ये कर रहे हैं, ठीक है, वो start ही इससे करते हैं कि पैसे कमाने हैं, and you see they're miserable, dude. Yeah. So pathetic. Yeah, and it shows in their content that absolutely. they're doing it for something else. तो मुझे वो कभी नहीं करना था. For me, I wanted to create a community. मुझे पता है सच में खुशी कब मिलती है. ये चलो ठीक है, like for me, okay, these are good benchmarks. If someone important follows me or recognizes my content, that's a good benchmark. When someone DMs me, some random person DMs me saying कि यार you sound like the voice in my head. I can't say certain things, but you say it and I can just share it and tell people कि हाँ ये मैं यही बोलना चाहती हूँ. That is when I feel that I have done my job. That's huge. Yeah. It's a big compliment. Yeah. What were your parents का कहना when you were doing your Insta thing? उनको पता था कि ये क्या कर रही है, क्या चल रहा है? उनको क्या अपडेट दे रही थी while you were at it here? तो ना, for my parents now, because I'm the youngest, they take me very lightly. कि तो ठीक है, कोई बात कर लेगी. हाँ, सारा प्रेशर डाइल्यूट हो जाता है ना. तीसरे तक आते आते क्या ही किसी के हाँ कर लो तुम, जो करना है बस, मरना मत, बस कर लो. जस्ट डोंट पुट योर लाइफ इन डेंजर, डू व्हाट यू वांट. सो दे वर लाइक कि ठीक है, शी विल फिगर आउट, शी इज फिगरिंग आउट. एंड इवन माय डैड वाज लाइक क्या अच्छा ये वीडियोस, अच्छा तो फिर वापस जॉब कब करना है, जब जॉब तो छोड़ दिया था पैंडेमिक में.
तो वापस जाके जॉब ढूंढोगे, क्या करोगे? And I was like, listen, this is a good enough work that I'm doing. But when I realized कि accomplishment तब हुआ है when my dad saw my bank statements. And he's like, ऑफिस आ जाओ, सीए के साथ बात करते हैं. I was like, ये हुआ ना. This is an achievement. Whoa! What a moment, yeah. Yeah. So now they're quiet. They take me seriously. Thank. So has this become like, you know, आओ मैं अपनी बेटी से मिलाता हूँ, या for रिश्तेदार being very... नहीं, और फिर उनके WhatsApp ग्रुप से मेरे वीडियोस आने लग गए. अच्छा. तो उनको लगा यार ये तो काफी मतलब लोग देख रहे हैं. WhatsApp पे आ गया, मतलब सच में फेम है. बिल्कुल. बाकी सब कोई चीज घूम गई WhatsApp पे अगर आ गई. And what was your immediate circle around you? How it changed when you कहते हैं ना कि जब आप सक्सेस पास आता है तो चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं. How that dynamic changed for you at a personal level? Thankfully didn't. Because my siblings, they're much older. और मेरे जो दोस्त भी थे वो भी, मतलब the kind of people I have always surrounded myself with, वो मुझे ना थोड़े औकात में रखते हैं. वो अच्छी बात है क्योंकि मैं ना उड़ने लग जाती हूँ. So I'm thankfully surrounded by people who keep me very grounded. So even my friends, my family, when they see me get the kind of attention I get, it's very humbling to see the fact that they appreciate what I do, yet they don't let it get to my head. So for them, I'm still मतलब कि chill, okay, good. Nice. So they will celebrate my achievements, but they will never be a fan. They will never treat me like they're a fan. Yeah, that's very important. If they start, जो लोग आसपास है जिनका काम ही आपके पैर पकड़ के रखना, while you are just want to become the parachute, and then it's very, very important. So basically nothing much changed. And are you very picky and choosy about people in your life? Extremely. I'm a huge introvert. As you saw when we met, I was just like deer in under headlights. I'm very awkward in front of new people. It takes me a long time to open up, and I'm very, very selective because I'm very sensitive to energies. और मेरा energy ऐसे drain होता है. And for the creativity that I have to show every day in the stuff I do, energies are very important to me. And I have to protect it. Yes. So I am very particular about the people. And people think कि यार ये rude है, ये मुंह पे कुछ भी बोलती है. And I'm very vocal through my expressions also. So if I don't like someone, it's very obvious. So which is a good thing because then I don't have to tell them that, they just get it. How convenient na be? I don't know. Yeah. Wow. So I mean, yeah, I am extremely private and I'm very, very... I think that filter is also needed as someone who's constantly putting a part of themselves on social media. थोड़ा private होना चाहिए अपनी sanity के लिए. नहीं, बहुत जरूरी है. What was the most emotionally charged moment for you in this journey of Insta and Reels when you actually felt, I understand the bank statement part of it. वो तो अलग. Like in a good way. In a very good way, very, very emotionally charged moment when you were like, okay, fine, you know. So Your vulnerably emotionally charged moment. Like, okay. Right. I did a reality show. Okay. तो एक तो वो मेरे comfort zone से बहुत ही बाहर था. And it was a reality show for Netflix, so it's one of a kind and it's, you know, anyway a very challenging thing. वहाँ पे I came across a person who told me that a year ago I started seeing your videos. I was heavily depressed. And I decided to not kill myself because of the hope that you gave me as someone who was a recovering person in depression. And I don't think anything matters after that. That if you have preserved a human life and helped someone just feel better, nothing can compare to that. No amount of achievements or money or accolades, nothing. Wow. Yeah. It stayed with you for a long time. It still is. Like, I'm getting goosebumps talking about it. Wow. But yeah. Beautiful. This is huge. This is really, really huge. I get it and I understand. Yeah. I know where it is coming from. Okay, what's the most expensive thing you have bought? अब जो तुमने नजर मारी थी कि अब बहुत पैसा आएगा ना,
मैं ना जाके लेके आएगी मैं। ये होता है पता है, अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हो या फिर कोई भी एक्सपेंसिव शोरूम में जाते हो, एक तो वो जो उनके जो सेल्स रेप्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे स्नूटी होते हैं कि उनके फेस पे ही लिखा होता है व्हेन यू आस्क फॉर सम किसी चीज का प्राइस, देयर फेस सेज यू इट्स एक्सपेंसिव, हाँ यू नो। तो absolutely. अभी आई वेंट टू पेरिस एंड वहां पे मैंने सोचा तो था कि कुछ ऐसे अच्छा टू ट्रीट माई सेल्फ, एंड क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बांध के रखती हूँ कि नहीं ये नहीं खरीदना, नहीं ये नहीं खरीदना, and then I just splurged. So I wanted to treat myself with something, and I was not sure. I walked into like a designer bags ka showroom, and like I really liked this one bag that was not on the display. So ab wo bhi na, that's a trick to keep people out. They don't display everything. Only if you're a customer who knows the brand well, you will ask for that, then they will show it to you. So I asked for that bag. और उन्होंने अपने ड्रॉर वॉर खोल के सब निकाल दी, एंड वेरी डिसइंटरेस्टेड, या दिस इज दैट, एंड आई वाज जस्ट लाइक यू नो व्हाट, आई विल गेट दैट दैट एंड दैट। और उसकी फट गई, मेरी सुन के फट गई, मेरी भी फट गई because I'm sure वो डिजाइनर बैग कितना कितना मजा आया वरना बहुत मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जैसे वो ऐसे वो बिल जब बना रही थी ना, उसकी शक्ल देख के मैंने कहा जल तू रो खून के आंसू रो ये देख के। वाओ या और उसके बाद फिर मैम विल यू हैव स्पार्कलिंग वाटर, मैंने कहा मैं स्पार्कलिंग वाटर नहीं पीती, मेरे लिए शैंपेन लेके आओ। मैं तो उसकी मैं अभी तक मैं सोच रही हूँ उसकी क्या फटी होगी। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल्स of your emotional struggles as a creator. Two things. Yeah. One though hit me very hard, and I stopped creating for like a year after that. And this was pehle Instagram ke. I used to make videos on YouTube also, and I was very active there. So I went to one such creators party. और उसके बाद में ना इनका कोई वर्कशॉप था, तो मैं वर्कशॉप पे तो नहीं गई। और वर्कशॉप के बाद मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आता है कि यार ये तेरा वीडियो वर्कशॉप में सबको दिखा रहे हैं ना, उससे अच्छा वो तो अच्छी बात है। तो बोलते नहीं, दे आर डिस्कसिंग दिस इज हाउ यू शुड नॉट मेक वीडियोस। What? Yeah, in front of like 200 people, and I heard that, and I was shattered. And they are from the same world. Yeah, they are actually heading that platform. So it's just people in power and how they're just abusing that power, and they think they can get away with that, but they don't know how it impacts that one person who might be listening and thinking that what did I do wrong. So that was one moment. And another moment sometimes I get is because you know how now like social media has given people a certain sense of anonymity. कि आपकी शक्ल नहीं है वहां पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो देयर आर सम डेज वेयर आई फील कि अभी ठीक है, आई डोंट केयर, एंड आई गेट सर्टन। और अब नाउ व्हेन यू आर एज यू गेट बिगर ना, द हेट इज नॉट स्मॉल, द हेट इज आल्सो बिग। सो देयर आर नाउ या सो सम डेज आई एम इम्यून टू इट, बट देयर आर सम डेज वेयर आई एम लाइक यार, इज इट वर्थ इट फॉर ऑल द hate that you get? And it's not even like mindless hate, right? It's really like they really know how to pick at your insecurities. So wo then hota hai, but then on the other days when I read certain things that people send me about how they got a different perspective. Someone told me they got to change their minds, their parents' minds about marriage after showing them one of my videos, and their parents accepted her boyfriend. Stuff like that. I'm like, bro, this matters way more than some idiot on Reddit saying some shit. Yeah. And that's when you need people around you who, and these are the people who keep you grounded. They can also tell you that you're more than this. You're more than a bad video. You're more than a hate comment. You're more than like your reach. But it's just the way social media is designed. It makes you feel like every failure is a personal loss. And as a creator, every loss hits you very hard. Every time you pass a comment, you write things, you say things. I mean, I hope you're mindful next time. मतलब अगर आप इस वीडियो पे सुन रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि A, it is not an easy job, and B, बहुत कुछ स्टेक पर होता है, राइट फ्रॉम सैनिटी टू क्रिएटिविटी टू अ लॉट मोर। मतलब हम तो नौकरियां करते हैं, हमें पता है कि 30 दिन के एंड में हमको एक सैलरी मिलेगी, वो सैनिटी सेट रहती है। हर दिन हमको कुछ क्रेजी परफॉर्म नहीं करना पड़ता। मैं जनरल जॉब्स के बारे में बात कर रही हूँ, हर दिन नहीं करना पड़ता। थिंक अबाउट पीपल जिनको हर दिन हर वीडियो के साथ परफॉर्मेंस होता है, चाहे वो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हों या फिर हम आरजेज हों, रोज आते हैं, रोज परफॉर्म करते हैं। सो बी
little kind, और अगर समझ में नहीं आए तो just be neutral. ठीक है? How do you create your content, put it, and then finally get set with it? I only write myself because I'm a huge control freak. Okay. So I can't work in a team. Does not, cannot happen. I'm very, very, very bossy, extremely aggressive, and very difficult to work with. So I get it, Leo girl. What's your birthday? 20th August. 19th August. Oh. Hi. This one just Hi. Yeah. Yeah. So I write all my videos myself, even the branded videos. Where sometimes the brand and my agent is like, listen, they are paying you. Please be nice to them. I'm like, I don't care. They are not understanding my vision. You must say something. I'm just waiting for her to not say the wrong thing. जो ब्रांड देख रहा है पैसे भिजवा दो अभी तक पैसे. But my nature of work is very erratic because I'm a writer. So creativity sometimes is there, sometimes is not. So when it's there, then sometimes I'm writing till 3 o'clock, and I don't just write videos. I also write like scripts and screenplays for TV shows and films. So for me, my nature of work is very different. Like what I also like to do is I like to maintain a list of things and just general observations that I see. So if I've gone to a party and someone has said something hilarious, like my friend was telling me that he was playing on his PS. और उसका cousin वो काफी मतलब his cousin is a very one of those like chintus कि nobody takes Chintus. तो चिंटू खेलते खेलते इतना गुस्सा आ गया. He's like, ये पता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये तमीज है, और जो भी बदतमीजी करता है मैं उसे तमीज से मिला देता हूँ. That's the funniest and most random thing I've heard in my life. ये तमीज है. और जो बदतमीज तो सलमान खान को बोलना चाहिए किसी पिक्चर में. He's great. That's so funny, right? So I just compile these things and I'm like, okay, I can put this somewhere. हाँ. खुद के माइलस्टोन्स क्या क्या बना रखे हैं. वो 3 बैग्स तो आ चुके हैं. तो और क्या क्या नजर है. So I do want to write films and shows of my own, because seeing what you have written on the play out on the big screen really makes you feel like God. और Leos को God complex तो होता ही है. Totally. Yeah, so I did a reality show for Netflix, and it's gonna be out very, very soon. And people are going to see a lot of sides of me. Some they may like, some they may be like, Gigi, kya kar rahi ho? Oh. So yeah, I'm sort of nervous about that one as to how that plays out, but it'll be very interesting to see. And largely मेरा कोई प्लान नहीं है, because I feel like मैं जो भी प्लान करती हूँ वैसा कुछ होता ही नहीं है. कुछ टाइम पहले मैंने प्लान किया था कि मेरे को लॉयर बनना है, वो हुआ नहीं क्योंकि मेरा थैंकफुली लॉ एंट्रेंस में एडमिशन ही हुआ. तो उसके इनको पानी दे दो हो रहा बनना था, बट थैंकफुली हुआ ही नहीं. तो आई थिंक जितना प्लान नहीं करो उतना there is scope for life to surprise you. And one thing which I want to do is I want to constantly entertain people. As long as I'm getting to do that wherever I am and whatever I'm doing, I think I'm good to go. What advice would you give to people who want to become content creator and they do? Yeah, don't follow others. Whoever I follow, I muted them. I don't watch other people's, because तुम मेरी बहन हो क्या? इतना मुझे कोई ऐसा कार्बन कॉपी. अभी मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने ये पूछा था कि तुम किसी और आरजे को सुनती हो. मैंने कहा नहीं, never. And I don't even follow them. Yeah, it's human nature. Yeah. आपको कुछ अच्छा लगता है ना, तो आपको वही करना होता है. So then you will never get the guts to actually do something original, because तुम्हें लगता है कि यही अच्छा बिक रहा है तो तुम्हें यही करना चाहिए. So don't follow others is what I would say. पहला observation और पहला reel, the story behind it. I'll tell you the story behind the first reel that like went massively crazy. तो अब मैं राजस्थान से हूँ, तो बॉम्बे में people have a very different perception of what Rajasthan is like. तो उनको पता नहीं क्या ही Prince of Persia mixed with Arabian Nights mixed with Paheli. So they have just a very different perception of what Rajasthanis are like.
So I made a reel on that. Like, you don't look Rajasthani. So then I dressed up as in traditional Rajasthani. After that, like, आप लग रही हो. So that went like crazy. And for a long time, people would recognize me only as that. हाँ. Yeah. Your favorite actors जो तुम्हें लगता है those who do justice, since you just said कि script को justice करना जरूरी है. हाँ. तो तुम्हें कौन लगता है? तो I appreciate writer actors more. क्योंकि writing एक चीज होती है, acting एक चीज होती है. To write something and to do justice to that what you have written. The only person who I just admire is Phoebe Waller-Bridge. What she has done with Fleabag, it's like if I get to be there somewhere in that arena, I feel like I have like done well. So on that note, last but not the least, इसके अलावा अगर कोई स्किल सेट है जिसके बारे में आज तुम खुलासा करना चाहती हो जो तुमने किसी को अभी तक नहीं बताया? This my friends do, they make me do this. So they show me a dating profile and I can tell you exactly what the person is like. And they go on the date and they're like, "बहन क्या पागल है." Are you serious? Yeah. Do you have time? Yeah. I have lots of time to do all this. Then ये तो फायर है. हाँ, ये काफी मुझे लगता है और मैंने ऐसे मजाक में एक दो बार कर दिया था. My friends would go on the date and be like, "Bro, यार ये तो वैसा ही था." और फिर मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा बिल पे करेगा नहीं करेगा. Are you serious? I have told them to the T what the date will be like. Will they go on a second date or whatever, all of that. And they were shook. Wow. Yeah. Maybe you have another job set also. Make to Insta profile. Seema auntie. Yeah. You got You have no clue how many men and women will come running. They will see petrol का खर्चा. They'll not go and meet only eventually. So how much have you applied this on yourself? नहीं, मेरे से खुद का तो blind leading the blind. मेरे को दिखते ही नहीं है red flags. लोग बोलते हैं red flag. कितनी प्यारी हो तुम. My therapist is like, listen, my therapist is like, you've been in therapy for 6 years. Okay, you saw so many red flags. तुम्हें क्या लगा? मैंने कहा मेरे को लगा मेला होगा. मेरे को नहीं पता था red flag. मैंने स्टिच करके साड़ी बना दी. जोर से मोहब्बत होती है हल्की फुल्की? अरे बहुत जोर से होती है. चप्पल सुंगानी पड़ती है जगह नहीं. सच है. बट जब तुम पढ़ती होगी तो फिर तो उनकी जब तुम्हें चप्पल सुन के तुम जब जागती होगी तब तो वो आगे और सरिया पीछे होता होगा. अरे काफी हाँ दर्दनाक होता है. बट वो है ना कि आई हैव अ वेरी टफ set of friends and a very hard wall in front of me to anyway keep the randos away. Okay. So those who can get past it, then it's like whatever happens. Okay. So what else? It's very personal. One, and I pick up dialects very fast. Lovely. So जैसे अगर मैं I'm spending time around people who have a Haryanvi accent, I pick that up. Very cool. Rajasthani accent, I pick that up. Punjabi accent. So that's why I pick up like dialects very, very fast. And then that I incorporate in my videos. Super. So I think it's really helpful. So and I read very fast. I can finish a book, like a big book. I can finish it in like 2.5-3 hours. And I can tell you word by word what the story was. वो भी इंटिमिडेटिंग लगता है लड़कों. मैंने कहा तो खुद पढ़ लेते ना 8वीं कक्षा में. तुम्हें किसने बोला था चौकड़ी मार के कंचे खेलने के लिए? पढ़ लेते तुम. कहाँ जाए फिर? क्या किया था? पता नहीं क्या ही करें. Oh God, lovely. It was such an amazing conversation, dude. You're full fire. Everybody's desire. क्योंकि हाथ नहीं होएगा. तुझे समझ ही नहीं आएगा ना. शुरू कहाँ से करें? Yeah. So I get it. Yeah. So on that note, I hope you had a good time chatting with us. Absolutely, I had a blast. I am so happy and I hope you had a blast watching us talk. बच्चल करते हुए सारी की सारी conversation. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज दिल खोल के अच्छी बातें लिखो. बुरी लिखोगे तो म्यूट कर देंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. We do have buttons to delete. Thank you so much and wish you loads and loads of luck and love. May you pick up 7 bags next time. Inshallah. And may there come a day कि तुम एक पूरी की पूरी जगह बुलाओ, मीटिंग बुलाओ और वहाँ पे जाके जिन क्रिएटर्स ने बैठ के उनका वीडियो बनाया तुम उनका वापस वीडियो चलाओ. अब वो they are not relevant anymore, so that's my revenge. मतलब They're not relevant. they don't have jobs.
Thank God I said this. Yeah. Now I know that part also. Yeah. Hey buddy, have you heard about karma? What goes around comes around. Yes. Yay! So lovely chatting with you. Keep up the good work and energy and everything. You are all things bright and happy. Thank and you so smile much. and full power. So if you love the conversation, do let us know. And I hope you love this episode of Red Verified. Please follow her. Of course, you follow her and give her a lot of love. And बस यहीं हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे जाते रहो. My name is Akriti. See you next time. Red FM 93.5